everyone, welcome back to my channel. If you're new here, I'm Shraddha Bansal, currently a first year BCom honors student at Sri Ram College of Commerce, Delhi University. So, until now, I've mostly uploaded shorts and quick updates. But since lately, I've been getting a lot of DMs and comments about the CSAS, preference sheet filling, cutoff, and document related doubts. That's when I knew that I need to sit down and give you a full proper breakdown. Watch this video till the end to get full information. So let's go. This is your complete guide to CSAS, DU's Common Seat Allocation System. So what exactly is CSAS? As most of you might be knowing, CSAS stands for Common Seat Allocation System. It is the official portal through which Delhi University handles its UG admissions. So everything happens here. Application, course selection, seat allocation, even college confirmation. Everything will happen here only. CSAS process takes place in 3 phases. First phase is open right now, which is registration, where you enter your personal info, your CET scores once the results are declared, and category details. Second phase, you'll fill your preferences. You create your college plus course preference list combination. I'll be covering that in my next video. Phase 3, seat allocation rounds. Based on your preferences and your CUET merit, you offer seats in rounds. Okay, so let's just quickly understand what are the documents required during your filling of phase 1. So I'll be attaching a list of all the essential documents you'll need to upload during your registration. Majorly, it's 10th-12th की मार्कशीट एंड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. अगर तुम्हें अभी तक 12th की मार्कशीट नहीं मिली है तो डिजी लॉकर पे जाके एक्सेस कर सकते हो. देयर यू कैन टेक योर स्कैन मार्कशीट एंड you have to self attest it. It's not mandatory, but it's better if you do it. Okay. Also, if you're applying to any category, say OBC, SC, ST, EWS, PWD, if applicable, you have to attach a central level certificate for that. If you are applying to any EC or sports quota, you need to mention it in your phase 1, and then you need to take separate trials and follow instructions for it. Quick tip: rename the files properly, scan them in good quality, and keep the PDF sizes under the limit. Common mistakes that you should avoid during your CVT application. First, not checking DU portal every day for updates and official DU bulletin carefully. DU हर साल अपना एक ऑफिशियल बुलेटिन निकालता है, उसमें उसके सारे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स सब कुछ गिवन होता है. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी. यू कैन रिफर टू दैट. Second, ignoring ECA or sports quota details, not uploading relevant certificates, or misunderstanding the additional trials evaluations required. You can miss out on a lot of opportunities which are given to the reserved quotas. So, read the documents carefully and specifically and prepare in advance. Third, and the most common mistake, uploading wrong or outdated OBC NCL certificates or invalid SC/ST EWS certificates. सी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कट ऑफ डेट मेंशन होती है. उसके बाद के आपके सर्टिफिकेट इशूड होने चाहिए, तभी वो वैलिड माने जाएंगे. एल्स योर एप्लीकेशन माइट गेट रिजेक्टेड. Remember, CSAS is auto processed. Once you make a mistake, there is a very little room to fix it unless TO opens a edit correction window. So उसके बाद आपको correction window के open होने का wait करना पड़ेगा. Then you can correct your details. So better है कि आप पहले ही सारे documents सही upload कर दो ताकि फिर correction window को wait ना करना पड़े. Now, let's just quickly move on to the common doubt asked. I've seen these doubts again and again. So, first is, can I get XYZ college with ABC CUET score? देखो, अभी जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें तुम्हारे जो भी स्कोर है वो अभी तुम्हारा रॉ स्कोर है. अभी नॉर्मलाइजेशन होनी बाकी है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स अलग अलग शिफ्ट्स में हुए थे. किसी का क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था, किसी का बहुत ईजी भी आया था. तो जिसके भी ईजी थे क्वेश्चन पेपर उसमें 10 to 15 मार्क्स का रिडक्शन हो सकता है, और जिसका भी हार्ड था पेपर उसमें तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं. सो अभी स्कोर तुम्हारा फाइनल नहीं है. ओनली दिस इज़ एन आइडिया. तुम्हें एक चांस दिया गया है कि तुम अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, और उसके मतलब रिगार्डिंग अगर तुम्हें कोई भी डाउट लगता है कि नहीं ये आंसर गलत है तो तुम उसके लिए एक्शन ले सको. Second, what if I don't get any college in the first round? You're still eligible for next rounds unless you opt for withdrawal. Third, is there a way to predict which college I'll get? This is a very common query. Answers vary by seat matrix, year, and category. There is no exact way to predict which college you'll get, but previous trends and COT percentile can help. Since इस बार एग्ज़ाम 800 की जगह 1000 में से हुआ था, कोई भी ऑप्शंस आपको छोड़ने के लिए नहीं मिले थे एमसीक्यू में. ऑल्सो अगर पेपर टफ आया है तो पूरे इंडिया के लिए टफ आया है, आपके अकेले के लिए टफ नहीं था. सो इस बार चांसेस हैं कि कट ऑफ्स लो जाएंगी. ठीक है, तो लेकिन फिर भी पास्ट ईयर कट ऑफ से आप एक आइडिया ले सकते हो. लेट मी नो इफ़ यू नीड एक लिस्ट ऑफ ऑल द ड्यू कॉलेजेस एंड देयर प्रीवियस ईयर कट ऑफ लिस्ट. फोर्थ, आई हैव अपलोडेड द रॉन्ग डॉक्यूमेंट.
व्हाट नाउ? अ करेक्शन विंडो और हेल्प ग्रीवेंस रिड्यूसल इज़ पॉसिबल। उसके लिए आपको करेक्शन विंडो ओपन होने का वेट करना पड़ेगा, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हो। और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो एडिट नहीं हो सकते, जैसे कि बैंक डिटेल्स वगैरह, आपको बहुत ध्यान से भरनी है। फिफ्थ, हाउ इज CVT परसेंटाइल कैलकुलेटेड इफ आई हैव अपीयर्ड इन मल्टीपल डोमेन सब्जेक्ट्स? देखो, मेजरली दिस डिपेंड्स ऑन द कोर्स कॉम्बिनेशंस विच यू हैव ऑप्टेड फॉर। फॉर एग्जांपल, एसआरसीसी में 2 कोर्सेज होते हैं, बीकॉम ऑनर्स एंड बीए इकोनॉमिक ऑनर्स। तो इकोनॉमिक ऑनर्स में आपका मैथ्स का स्कोर कंपल्सरीली लिया जाएगा, बट बीकॉम ऑनर्स में यू कैन हैव अ ऑप्शन। अगर आपने दोनों सब्जेक्ट्स में अपीयर किया है, बी इट अकाउंट्स एंड मैथ्स, तो फिर आपका जो बेटर स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाता है। Next out is interview required in any DU program? See, only for select supernumerary quotas such as NCC, NSS, ECA, sports, and few specialized programs like music, fine arts. For those courses, interviews are conducted, but for other courses like BCom honors or economic honors, interviews are not conducted. Next, will DU give preference to Delhi NCR students? No, DU is a central university, so admissions are based solely on your CET performance and reservation norms. Next, if I don't upload ECA certificate, can I still be considered in general list? Yes, you will be considered for general admission if ECA is not pursued fully, that is, no trial or no certificate. Okay, so these were the doubts which I had received earlier. Drop more doubts in the comments. I'm reading each and every doubt and will try to reply to as many as I can. So that was your full breakdown of CSAS, how it works, what documents you need, and where to find the brochure and what to watch out for. But now comes the real game changer, your preference list. It decides your future, and the way you structure it can either land you to your dream college or get you stuck somewhere you did not even want to be. That's why in my next video, I'll be sharing how to make a smart preference list. And if this video hits 1000 views, I'll also share my own preference list and the exact strategy I used and the mistakes I avoided to unlock SRCC.